So very good evening to you all. Today's our class is MCQ class number 6 of the paper 2, Mass Communication and Journalism. Here we are going to start with the questions. The well-known sequence Odisha steps appears in. The well-known sequence Odisha steps appears in Mother, War and Peace, The Battleship Potemkin, and Diary of a Country Priest. Everybody will answer. Very well-known questions. Very well-known question from the cinema chapter. Okay, well, very good. So here that answer it is the Battleship Potemkin. Okay, so here the right answer it is Battleship Potemkin. So Battleship Potemkin, that is the 1925 Soviet silent propaganda film directed by the Sergei Einstein. Okay, so this film is based on totally that mutiny of the Russian sailors against their tyrannical superiors aboard the battleship Potemkin during the revolution of the 1905. Okay, so this is what the it was made in the year 1925. Please note it down. And also that who directed this movie? Everybody answer. Sergei Einstein. So another here that about the Mother movie. Okay, everybody that Mother movie. Who directed Mother movie? It is a 2017 American psychological horror film. Okay, directed by yes Darren Aronofsky 2017. Okay, War and Peace. So War and Peace is a 1956 epic historical film drama film based on the Leo Tolstoy that 1869 novel of the same name. Okay, so that is what the 1956 drama film it is. Okay, yes, directed by, please everybody write together, 1956 by King Vidor. Okay, yes, and the Diary of the Country Priest here, that is a 1951. It is a French drama film written directed by Robert Bresson. Yes, very good. Okay, so these are the things that you have to remember. Okay, so just I'm revising it. Okay, so just you can do write it here the years 2017, 1965, 1925, and also that here the 1951. Okay, so these are the important years for this film, and write it here the director's name, very much important. Just we are revising it here, that Darren Aronofsky. War and Peace, that based on the Leo Tolstoy. Okay, Leo Tolstoy, that is here by the King Vidor. Okay, yes. Battleship Potemkin 1925. Yes, but yes, everybody, that is Sergei Einstein. And the diary of the country priest, please, that is released in the 1951 by the Robert Bresson. Okay, प्लीज नोट इट डाउन. ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे और नोट डाउन कर लीजिए. वेरी मच इंपॉर्टेंट. Okay, all clear, everybody. This question was asked in the UGC-NET exam. So this is what about the Odisha steps. Okay, that the masquerade of the civilians, very much popular. Also this about very much popular now, the name of these stairs is the Potemkin stairs. Okay, chaliye. So it is clear, everybody, it is clear. जल्दी से बताएंगे so that we can move.
Okay. I think from my side it is clear, all clear. Chale, next we will move towards the questions here. Yes, that 61 here, that fog index refers to. Fog index refers to framing, B, readability, C, visibility, and D, that is availability. Everybody, that fog index here refers to what? Fog index. Everybody answer. Yes. So here the answer here it is, that is B, readability. Okay. So fog index refers to readability. So just read the explanations here. The fog index is a readability test designed to show how easy or difficult a text is to read, right? So this is the that objective of the fog index. Okay. The purpose of the fog index, why fog index it is used, that to just that to how it is easy or how it is difficult a text to read, that it measures, okay, the readability. So it uses the following formula: reading level, the grade is equal to average number of the words in sentences plus percentage of the words of three or more syllables multiplied by 0.4. So this is what the resulting number is, your gunning fog index. So this is what the about the fog index. It measures the readability, how the text it is difficult which you are reading. So that is the difficulty level of the text or the easy level of the text that we read, the text that we measures. Okay, so that is what about the fog index. It is all clear, everybody? Yes. So next here it is about participatory content creation is known as. Participatory content creation is known as precision journalism, citizen journalism, turncoat journalism, envelope journalism. Everybody, participatory content creation. Yes, very simple question here. Everybody answer, please answer. जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे. Just wait, just wait. Yes. So here the right answer it is, that is B. So citizen journalism is the right answer. That is participatory content creation is known as citizen journalism. So citizen journalism also known as collaborative media, participatory journalism, democratic journalism, guerrilla journalism, or the street journalism. The varieties of name to the citizen journalism here it is. So please focus all these names. So they may alter the name and they can ask you. Okay, so you should remember all these names: the democratic journalism, guerrilla journalism, or the street journalism. That is based upon the public citizens. Okay, so playing an active role in the process of the collecting, reporting, analyzing, and disseminating the news and informations, like the media persons, that each and every persons are able to now the record and upload the videos or the content. So this is what about that, about the various examples are of the citizen journalisms are here, where in which we are participating in a democratic society or the democratic country. Okay, so this is what about the participatory content creations. Okay, next here it is the Indian media group which has tied up with the Reuters news agencies. Everybody, B, the Tribune, B, Anand Bazar Patrika, Malayalam Manorama, the Times of India. Just name the Indian media group which has tied up with the Reuters. Everybody. चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग. Yes, absolutely. So here we got the right answer. That is D, Times of India. Very good. So the Times of India is the media group which has tied with the Reuters news agencies.
चलिए, so let's talk about the others. Prominent newspaper about the Tribune. Okay, so when the Tribune was established, everybody, the Tribune newspaper, that is English newspaper published from the Amritsar, Lahore, Punjab. Okay, yes, that is 1881. Okay, by the Dayal C. Majetia. Okay, yes, very good. Dayal C. Majetia, very good. Anand Bazar Patrika. Yesterday we talked about the Anand Bazar Patrika. Everybody, 1876. Okay, by the two Ghosh, that is everybody, Shishir Kumar Ghosh, yes, and Motilal Ghosh. Very good, very good. Malayalam Manorama, that is 1888. Yes, by the Kandadhil Varghese Mapillai. Yes, very good, very good. Times of India, 1838. Yes, very good, Abhishek. Yes, Times Group, Bennett Coleman. Yes, very good. So these all are the prominent newspapers, right? That you have to know the launching years of the newspaper as well as the founders of the newspapers. Okay, so they can ask you any questions. Okay, so ये सारी चीजें आपको याद रखने हैं. Let's talk about the Festinger's. Leon Festinger's proposed which theory? Everybody, without option, if you can answer, please answer. Festinger proposed cognitive dissonance theory, reader response theory, symbolic convergence theory, and D, that is structural theory. Everybody answer about the Leon Festinger. Yes, absolutely. So here the right answer here it is, that is A, cognitive dissonance theory. Okay, so cognitive dissonance theory, that first important here it is that the years 1957. Okay, just note it down and remember it. 1957 cognitive dissonance theory was developed, and it was developed by the Leon Festinger. Okay, Leon Festinger proposed the cognitive dissonance theory. So, what is cognitive dissonance theory? What the main objective of the cognitive dissonance theory here it is? So, example here it is given. ठीक है, एक example आपका दिया हुआ है. So, that is what here that you will see. So, when people smoke and they know that the smoking causes cancer, right? So, here it is that the when people smoke, that is the behavior of the people. Okay, that is here the behavior of the people, that he is smoking. Okay, and he himself know that the smoking causes cancer. This is what the cognitions. Okay, so they are in the state of the cognitive dissonance. It means that, so that is conflicting of the attitudes, conflicting of the, yes, it is in the dilemma, right, whether we should smoke or not. So this is what conflicting of attitudes, beliefs. Okay, beliefs or behaviors. So this is what about the conflicting of attitudes, beliefs, also behaviors. There is a situations when it comes. Okay, there is a situation when it comes about the conflictions of attitudes, right? कुछ ऐसी चीजें एक समय आती है, कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर हम डिसीजन जो लेना चाहिए वो हम नहीं ले पाते. एटीट्यूड्स का इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिलीफ का कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो आपके लाइफ में भी, आपके डेली रूटीन्स में भी कई बार ऐसा होता होगा कि आपको डिसीजंस कॉन्फ्लिक्ट के कारण कोई एक चूज करना पड़ता होगा, राइट? देयर इज अ समथिंग सिचुएशंस देयर, राइट? सो दैट यू टेक डिसीजंस वन. So that is what here about the conflicts of the attitudes, beliefs, or the behaviors. So
यू कैन गिव ऑल्सो द वन मोर एग्जाम्पल, सभी लोग एक एक एग्जाम्पल देंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी का, ओके कि कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है बिहेवियर्स का, बिलीफ्स का और एटीट्यूड्स का. लेट्स discuss it, right? Because cognitive dissonance theory we have not discussed in a separate way, so that we can discuss it. जल्दी से बताएंगे everybody. So just to give an example, everybody will give an example where you found a situations there is a conflicts of attitudes, beliefs of the behaviors. Yes, the Vanika has here shared a thing that if to watch Kashmir files or not, right? So, like for an example, there is a conflict of the belief here, or you can say that about the our your behaviors also. That is what to watch the movie or not. So that is what you take decisions. ठीक है, कोई आप एक डिसीजंस ले लेते हो कि हाँ चलिए. कभी कभी ऐसे लगता होगा कि इफ यू आर ए हंगर, ठीक है, आपको भूख लगी हो बहुत तेज, राइट, और आपको खाना खाना चाहते हो, जस्ट रेस्टोरेंट भी है और साथ ही साथ में आपका रेस्टोरेंट भी है और एक दैट फास्ट फूड आइटम्स भी है, राइट. Fast food items are also that you want to eat because you have not eaten from the morning, right? So that is what the restaurant and the fast food things are also available. So just you prefer to somehow here, right? आपका कॉन्फ्लिक्ट से ये भी यहाँ भी जाने का मन कर रहा है और यहाँ भी जाने का मन कर रहा है, एंड यू टेक डिसीजंस अबाउट, राइट, द कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ द डिफरेंट द एटीट्यूड्स हियर, दैट यू जस्ट go into the fast food corner and eat the fast food items. Okay, so this is what happens. ये सभी के साथ होता है. कभी कभी हम चाउमीन खाकर पेट भर लेते हैं, राइट. चलिए. So tenderly saying that when you encounter fake news but you still forward it knowing it wrong because that news aligns with your belief and value systems. Okay, yes, very good, very good, very good example here it is. चलिए, सो टेंटल यहाँ पर शेयर कर रही हैं आपके साथ इंफॉर्मेशन, जस्ट रीड इट अबाउट दैट. इट इज अबाउट द फेक न्यूज दैट यू नो दैट इसको हम फॉरवर्ड करेंगे तो गलत होगा, बट स्टिल यू फॉरवर्ड, राइट, स्टिल यू फॉरवर्ड. सो दिस इज व्हाट. यस, ओके, वेरी गुड, दिस इज योर थेसिस. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही सुंदर. चलिए, अच्छा है, कुछ आपके थीसिस जो है निकल कर आएंगे कुछ रिजल्ट एंड इट विल बी बेटर फॉर अस. चलिए, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड टेंडन. चलिए, सो ये आपका क्या है, एक ऐसा डायलेमा का स्थिति आ जाता है, एक मेंटल सिचुएशन इस तरीके से आता है जहां पर आप जानते हुए भी कि ये चीज गलत है, फिर भी आप उसको करते हो. आपको पता है कि फास्ट फूड खाने हमारा सही टाइम नहीं है खाने का, राइट. दिस इज द एक्चुअल टाइम टू ईट द फूड हेयर, नॉट द फास्ट फूड. ओके, सो that you want to take decisions, right? There is the conflictions of the beliefs or the attitudes or some behaviors. Okay, that way here we have taken the example of smoking. Okay, all clear? सभी लोगों को क्लियर है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी? यस यस, डॉरी सिस्टम इज रॉन्ग बट वी फॉलो इट, राइट. आपको पता है दहेज लेना अपराध है बट स्टिल यू टेक इट, राइट. चलिए, बहुत ही सुंदर, आगे बढ़ते हैं. The first European who attempted to bring out a newspaper in India was here James Augustus Hickey, James Silk Buckingham, William Carey, and William Bolts. Everybody, the first European. Abhilasha, how it will be D? William Bolts. No, it's not. Okay. All right. So here the right answer here it is, that is A. Yes. A it is. That is the first European who attempted. Yes. The first European, right? The who attempted to bring out a newspaper in India was the James. Attempted, that is attempted means what? Here that attempted यहाँ पे आपको confuse करने के लिए आपको दिया हुआ है, right? Just to get,
इन कंफ्यूजन करने के लिए, अटेम्प्टेड और पब्लिश इसका लेना देना नहीं। द फर्स्ट यूरोपियन हेरिटेज, जस्ट जेम्स अगस्टस हिकी जो थे वो यूरोपियन थे। इट मीन्स द फ्रॉम किस कंट्री से, दैट ही बिलोंग टू विच कंट्री, जेम्स अगस्टस हिकी, yes, Irish, okay, it means Ireland, and Ireland comes in the European continent, okay, Ireland comes in the European continent. So here James Augustus Hickey was the Irish, you can say the journalist or the authors also, okay. जेम्स सिल्क बकिंगम जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, राइट? ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। जेम्स सिल्क बकिंगम जो थे वो क्या है, ब्रिटिशर्स थे, ओके। सो हेयर दैट आयरलैंड, दैट आयरिश, यस, ग्रेट, वेरी गुड। सो कैलकाटा जनरल ने उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ बंगाल गैजेट, ओके, he attempted to bring out a newspaper in India, that is Bengal Gazette, and by the James Augustus Hickey, he was a European. Okay, so that is here the question. It is asked to you that to make confusion. So the first European who attempted to bring out a newspaper in India is James Augustus Hickey. Okay, all right, it is clear to you all, everybody. सभी को clear है? Okay, all right. चलिए, let's talk about the selectivity theory. So selectivity theory emphasizes on everybody masses, source, channel, entropy. Everybody. Yes. See, selectivity theories that emphasize on the masses here, right? Selectivity theory that emphasize on the masses. So selectivity theory that basically that it developed in the 1950s, and it refers to individual tendencies or the favor informations, okay. Here it is talking about the informations, okay, the favor informations which reinforces their pre-existing views while avoiding the contradictory information. So here we have also given here the example, like for a teacher may have a favorite student, right? A teacher may have a favorite student because they are biased by in group favoritism. The teachers ignores the students poor attainment, okay. So here it is what about the favoritism here, that the masses which were very much familiar or the it is interested about, there is no any contradictory informations here, right? You are avoiding the all the contradictory information. Here it is as per your interest, right? As per your that what you are here ignoring, you are ignoring the poor's attainment, right? The active attainment जो है आपका उसकी तरफ जो है आपका आकर्षित है, right? So वो चीज आपका फेवरेट स्टूडेंट हो सकता है, फेवरेट आपका इंफॉर्मेशन, किसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, दैट यू आर in the favor of that particular informations. That is what it is, pre-existing views, right? It reinforces that here talking about, it reinforces their pre-existing views. जो आपका पहले से इंटरेस्ट बना हुआ, उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप न्यूज भी देखते हो, राइट? लाइक फॉर एन एग्जांपल, योर फेवरेट इज दैट स्पोर्ट्स, राइट? स्पोर्ट्स बीट्स का आप ज्यादातर न्यूज देखते हो, राइट? सो दिस इज व्हाट योर, that is your favorite, right? The favorite informations. So you generally just you got the newspaper and you turn the pages of the sports, right? So that is what your interest it is. So that is the pre-existing views that reinforcing the pre-existing views. So that is here talking about the favorite informations. So here the selectivity theory that totally emphasize on the messages, okay, the informations. It is all clear, everybody? सभी को क्लियर है? चलिए, ऑल राइट, बहुत ही सुंदर। चलिए, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब सब्जेक्टिव का, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ सब्जेक्टिव भी करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा कवर करना है फास्ट, कोई चीजें आपसे छूट ना जाए। सो चलिए, क्वेश्चन सब तैयार हो जाएं, एवरीबॉडी हु इज नोन, everybody, who is known for,
his critical theory of society? Everybody will answer. Critical theory of society. Just I'm also giving you the hint for cultural industry. Everybody. Cultural industry. No, cultural industry that here I have written here. The cultural industry as a critic of both fascism and what he called as. Yes, very good. I got the answer from the Abhishek and Rachna. So here the right answer it is that is yes, Theodore Adorno. Okay, yes, very good. Please note it. Theodore Adorno known for cultural industry. Okay, very good. So Theodore Adorno described here the mass media as a cultural industry. So they can also ask you, they can alter the questions like who uh, said that media as a cultural industry. Okay, media as a cultural industry. So they can alter the questions also. So media as a cultural industry, that is Theodore Adorno. So whenever the cultural terms it is there, right? जब भी आपका culture जैसा term है, so that it will reflect to the Theodore Adorno. Okay, so that is what here the known for his critical theory of the society as well as the cultural industries. Okay, very good. All clear? जल्दी से बताएंगे सभी को clear है? Okay. So here the next it is about which medium is considered as a मैकेनिकल मीडियम. ओके, जल्दी से बताएंगे कौन सा मीडियम जो है कंसिडर्ड एज द मैकेनिकल मीडियम. एवरीबॉडी. रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट क्या है? So here the right answer it is that is televisions. Okay, television considered as a mechanical medium. Okay, yes, TV is considered as a mechanical medium, so just note it. Okay, chaliye. Next here the question it is that the study of signs and symbols, everybody, and their use of interpretations. Very good, very good. And their use of interpretations is called. बहुत ही सुंदर. So right answer here it is that is very good. Everybody has answered. So that is semiotics. Okay. Please note it down. साथ साथ में note down करते हुए चलेंगे so that it will be cleared. Okay. और आपका साथ ही साथ आपका बनता रहेगा notes भी. You might have turned about the enlightened self-interest. Okay. Can anybody tell what is it? Enlightened self-interest. Everybody. So write it down. Okay. Just I'm giving the point here. Just parallel आप लोग लिखते चलेंगे. It is a philosophy. It is a philosophy in ethics. Okay. जो क्या बताता है आपको? Which it states that the persons who act to further the interest of others. Okay. The persons who act to further the interest of others. Okay. That can be or the interest of the group also. It is about that it has been simply observed by the belief that individual or the group or even commercial entity that do well by doing good. Okay, so that is about the enlightened self interest here, that आप अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को डेवलप इस तरीके से करते हो दैट इट एक्ट टू द फर्दर इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स. लोगों की आपको देखकर भी लोग इंटरेस्ट बनाते हैं, राइट? स्टडिंग नाउ विल हेल्प अस बेटर. Yes, exactly, Tyndall. Very good example given by the Tyndall here, that like studying now will help us get a better job in the future. So this is what about the enlightened self-interest.
Okay, very good example given by the Tyndall, so that you can take here, right? बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल। जो आप अभी पढ़ रहे हो उससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में जॉब मिलेगा। ओके, so that is what enlightening the self interest here, right? So that is a philosophy in the ethics which states that a persons who act to further the interest of the others, so this is what about the enlightening the self interest here। okay, so here the question it is about, अब रियल क्वेश्चंस क्या आपका निकलता है। सो हियर द क्वेश्चन इट इज enlightened self interest is the notion is the notion behind, so that they can ask you the questions here, right? Questions आपसे पूछा जा सकता है। so what it that here the right answer, that is notion behind the corporate social responsibility। okay, please note down, it is the notion behind the corporate social responsibility, that is CSR। okay, all right, it is clear everybody। चलिए, नेक्स्ट अबाउट जस्ट रीड इट, द गेट फोल्ड। जल्दी से बताएंगे गेट फोल्ड क्या होता है एवरीबॉडी। yes, very good, that is it found in the mostly the magazine। okay, a type of fold used for advertising around a magazine, yes, or the section। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है आपका, आपने देखा होगा बहुत सारे चीजें में इट इज इन द मैगजीन, ओवर साइड पेजेस इन द मैगजीन और द बुक। यस एग्जैक्टली, आपने कोई भी बुक आप देखेंगे तो उसमें आपको कैलेंडर भी, राइट, अ कैलेंडर दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ द एडवर्टीजमेंट। जब न्यू मंथ आता है, न्यू ईयर आता है, तो वो लोग क्या देते हैं आपको, कैलेंडर देते हैं। और कितना ओवर साइज पेजेस होता है, राइट, इट इज बेसिकली अबाउट द ओवर साइज पेजेस एंड दैट इज फोल्डेड देयर, राइट, और फोल्ड करके आपके बुक के अंदर ही लगा रहता है। हाउ मेनी ऑफ यू सीन, कितने लोगों ने ऐसा देखा है जो कि बुक के अंदर बहुत बड़ा पेजेस होता है, उसको फोल्ड कर कर और बुक के अंदर ये रखा रहता है, राइट? सो दिस इज व्हाट अबाउट द गेट फोल्ड, इट इज काइंड ऑफ द एडवर्टीजमेंट। ये एक तरीके का एडवर्टीजमेंट का स्ट्रेटजी है जो ओवर साइज पेजेस होते हैं, राइट, दैट इज इन द बुक और द मैगजीन इट इज फाउंड। ओके, यस एब्सोल्युटली, सेम साइज का ही आपको उस तरीके से आपको दिखे, बट इट इज इंटेंडेड टू बी ओपन आउट फॉर द रेटिंग। ओके, yes, so that the here the questions they can ask you about the gatefold also। okay, चलिए, all clear। okay, let's talk about here the some committees। so film inquiry committee, okay, film inquiry committee, फिल्म इंक्वायरी कमिटी व्हेन इट वाज, जल्दी से बताएंगे, कुछ पॉइंट आप लिखेंगे और नोट डाउन करेंगे। इट वाज, yes, absolutely, very good, very good, this committee was set up in the 1951। okay, under the chairmanship of, just note it down, under the chairmanship of Mr. S.K. Patil। okay, that made a comprehensive discussion, comprehensive recommendations, okay, on the film, comprehensive recommendations on film here, film industry, or the other related matters। it is about that film investigations, deeply go into the deep and studies about the film, that is that what the film industries basically they are providing। okay, so that is what talking on the film industries। so this is what about the film inquiry committee which was set up in the 1951 under the chairmanship of the Mr. S.K. Patil। okay, ये आपको
रखना है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द खोसला कमेटी। जल्दी से खोसला कमेटी के बारे में बताएंगे। खोसला कमेटी, KHOSLA। Any guess? It is in the 1969. Okay. Yes, absolutely, absolutely. That is basically the examines the film censorship certifications. Okay. बहुत ही सुंदर. So you can write it. It examined the working of existing laws, machinery, and the procedure for the certifications. Okay. Of Indian as well as foreign. Okay. Cinematograph films. Okay. So that it examined the working of the existing laws, machinery, and the procedure for the certification of the Indian and foreign cinematograph films. Okay. इसको लेकर क्या है, एक चीजें एग्जामिन करना, स्टडीज करना कि किस तरीके से हमारे एग्जिस्टिंग लॉज है जो फिल्म के लिए काम कर रही है, मशीनरी और द उसकी इक्विपमेंट, सारी चीजें, प्रोसीजर दैट फॉर द सर्टिफिकेशंस ऑफ इंडियन फिल्म, इसको लेकर स्टडी करना खोसला कमेटी में ये चीजें था. ओके. So Khosla committee made the number of the recommendations here for the improvement of the existing censorship laws. Okay. So basically that you can also understand here, that is studies on the existing censorship law. जितने censorship laws थे उसको लेकर स्टडी करना और बहुत सारे recommendations इन्होंने प्रोवाइड भी किया है. So we can say that in depth here, the in depth the effects of films also. ठीक है. फिल्म का पूरा तरीके से इफेक्ट देखना. ऑल्सो अबाउट द सेंसरशिप लॉज, ये सारी चीजों के ऊपर क्या करना, डिस्कस करना. लॉज हो गया आपका, प्रोसीजर हो गया, मशीनरी हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, सेंसरशिप हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करना, स्टडी करना. ओके. सो दिस इज व्हाट द खोसला कमिटी दैट इज इन द हियर 1969. इट इज ऑल क्लियर? जल्दी से बताएंगे क्लियर है? ओके, ऑल राइट. चलिए. So let's talk about here the समाचार. समाचार के बारे में बात करते हैं. What is समाचार here? जल्दी से बताएंगे. When समाचार was founded, everybody? Yes. चलिए नोट डाउन कीजिए, एक एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे. बेसिकली द समाचार, yes, this is the news agency which was merged, okay, during the emergency. चलिए नोट डाउन कीजिए. It was founded in the February 96. Okay. Please note it down. All the things are important here. They can ask you from the anywhere. Okay. And it has already been asked. So it was founded in the February 96 after the merge of, ठीक है, क्या क्या चीजें मर्ज हुई थी, कौन कौन सी चीजें मर्ज हुई थी. यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, एक न्यूज एजेंसीज को, सारे न्यूज एजेंसीज को मर्ज करके एक न्यूज एजेंसी बनाना. यस. पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वेरी गुड. वनिका, यूएनआई, पीटीआई और समाचार भारती, समाचार भारती एंड हिंदुस्तान समाचार. ओके. ये चारों न्यूज एजेंसीज को मर्ज करके एक न्यूज बनाना, दैट न्यूज एजेंसी बनाना, दैट इज समाचार. यस, वेरी गुड. इट वाज रिकमेंडेड लेटर बाय द कुलदीप नैयर एंड ऑल्सो इस बाद में ये चीजें चला नहीं. Yes, and this news agency was basically under the control of the government of India, right? You have to know this news was totally under the control of the government of India during that time. So in the 1977, what happened in the 1977? Kuldeep Nair recommended here this, okay? Kuldeep Nair, please note it down. Kuldeep Nair committee
recommended the independence of the four news agencies. ठीक है, independence of the four news agency as they were before the emergency period. ठीक है, before the emergency. So that is what the in 1977 में क्या हुआ, कुलदीप नैयर कमेटी फ्रेम हुआ, सॉरी रिकमेंडेशंस आया कुलदीप नैयर कमेटी का कि वो फोर न्यूज एजेंसीज जो है जो पहले जैसे थी उसी तरीके से कर दिया जाए, ठीक है, और सभी को इंडिपेंडेंट रखा जाए, ठीक है, द इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर न्यूज एजेंसीज एज दे वर बिफोर द इमरजेंसीज. ओके, यस, वेरी गुड. सो दैट इन द 1978 में क्या हुआ, इन द 1978 हियर 1978 here that all the four news agencies, सारे four news agencies जो हैं, all the four news agency here that is split, yes, all the news agencies split from the समाचार, ठीक है, समाचार से सारे अलग हो गए, ठीक है. तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ईयर्स पे, ठीक है. सो स्प्लिट जो है 1978 में, 1977 में रिकमेंडेशंस हुआ, 1978 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि वो सारे जैसे पहले थे वैसे चीजें हो गए. ओके, दैट ऑल द फोर न्यूज एजेंसी दैट स्प्लिट फ्रॉम द हियर समाचार. ओके, इट इज ऑल क्लियर. जल्दी से बताएंगे, सभी को क्लियर है. यस, सो हियर द व्हाट द इंफॉर्मेशन हियर इट इज दैट इंपॉर्टेंट हियर इट इज. पहला आपको समाचार के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि दिस इज अ न्यूज एजेंसी दैट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1976 में ये फाउंड किया गया. और इस न्यूज एजेंसी जो है, दिस न्यूज एजेंसी दैट इज द मर्ज ऑफ द फोर न्यूज एजेंसी दैट इज यूएनआई, पीटीआई, समाचार भारती एंड द हिंदुस्तान टाइम्स. ओके, third important here it is that about the recommendations, who recommended about the independence of the four news agencies. तो ये आपका कुलदीप नैयर. ओके, सो इन द 1977 में कुलदीप नैयर कमेटी का रिकमेंडेशन हुआ दैट टू इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर न्यूज एजेंसी एज दे वेर बिफोर द इमरजेंसीज. ओके, and that is 1978 में that is it is about the implementations that all the four news agencies that is split from the समाचार. ओके, समाचार से सभी अलग हो गए. ऑल क्लियर. चलिए, सभी को क्लियर होना चाहिए. इट इज ऑल क्लियर. यस, एब्सोल्युट. अभिलाषा, इट इज क्लियर टू यू. जल्दी से बताएंगे. ओके, सो हम लोग चलिए जल्दी से बताएंगे. मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को हम लेकर डिस्कस कर रहे थे. तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी दैट गिवन और डेवलप्ड बाय द एवरीबॉडी, डैनियल लर्नर. सो डैनियल लर्नर जो है, यस, डैनियल लर्नर वाज अ विच स्कॉलर, कैनेडियन स्कॉलर, जर्मन स्कॉलर, अमेरिकन स्कॉलर, कौन सा स्कॉलर थे एवरीबॉडी. यस, अमेरिकन स्कॉलर. प्लीज नोट इट डाउन. छोटा छोटा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, राइट. सो डैनियल लर्नर वाज द अमेरिकन स्कॉलर, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए. अब से एक क्वेश्चन से अबाउट द सैम्पलिंग से आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. स्नोबॉल सैम्पलिंग, you know about the snowball sampling that we have read. Okay, snowball sampling method is useful when the, yes, it is the part of the non probability. Very good. When the universe is, जल्दी से बताएंगे क्या होगा. क्या universe here, the I'm just small and specific, large and specific, which one is more appropriate. Snowball sampling method is useful when the universe is, everybody answer. Very good, very good. Here the right answer is that is small and specific. Yes,
So here small and स्पेसिफिक ओके। जितना जो ज्यादा छोटा होगा तभी तो आप अंदर गहराई तक पहुंच सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट अबाउट द स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो दिस इज व्हाट दैट यू आर रिसर्चर, राइट। और आपको एक इंफॉर्मेशन मिली थी यहाँ पे, दो इंफॉर्मेशन, ठीक है, इस तरीके से आपको मिला इंफॉर्मेशन फिर, ओके। in this way you got the information here. So that is what that you are reaching to a things like the small universe। जब आपका रहेगा तभी जाकर आप snowball sampling के ऊपर आप मेथड यूज कर सकते। यू कैन यूज दिस मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट दिस मेथड टू रीच इनटू द एग्जैक्ट हेयर द डेप्थ, ठीक है। चलिए, सो इट इज अ नॉन सैम्पलिंग मेथड, सॉरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, ओके। चलिए, ऑल क्लियर अभिषेक, इट इज क्लियर टू यू? ओके। सो यू नो दैट ये जल्दी से आपको रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड, सो हियर रिलेटेड विद द क्वेश्चंस, हियर इट इज रमन मैग्सेसे अवार्ड को लेकर क्वेश्चंस है दैट इट इज नेम्ड आफ्टर, you know that it is named after the Raman Magsaysay। So who was the seventh president of, जल्दी से बताएंगे किस कंट्री के सेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ, इट इज नेम्ड आफ्टर द रमन मैग्सेसे, who was the seventh president of which country? जल्दी से everybody answer। Very good, absolutely, Philippines। Here the right answer it is that Philippines, okay। बहुत ही सुंदर, Philippines is the right answer, seventh president of the Philippines, okay। So that is given in the basically six categories में दिया जाता है और it was discontinued in 2009। So we again here आपका फिर से दिया जाने लगा and it was first awarded in the 1958, okay। और किसे दिया गया था 1958 में, किसे दिया गया था anybody? It was first awarded in 1958 and to whom? Yes, note down कीजिए, important, Robert Hooke, okay। Robert Hooke is the right answer। So Robert Hooke was awarded for the first time of the Raman Magsaysay Award in the 1958, okay, please note it down। चलिए, हाँ, so many things are here। चलिए, एक क्वेश्चंस आपके साथ रखता हूँ। स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और सन टीवी, एवरीबॉडी सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, जल्दी से सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। स्टार प्लस, सोनी टीवी, जी टीवी, सन टीवी, अरेंज इन ए सीक्वेंस। चलिए, सो एक बार ईयर लिख लेते हैं सो दैट यू कैन नो बेटर, ओके। सो सन टीवी 1992, ओके। जी टीवी हेयर ऑल्सो 1992, ठीक है। सोनी हेयर दैट इज 1995 और स्टार प्लस भी है जो आपका 1996, ओके। सो आपका क्वेश्चंस में अगर ऑप्शंस में इस तरीके से रहेगा, पहले आपका यस जी स्टार, सोनी, सन टीवी बहुत पुराना है, ठीक है। इट इज बेसिकली सन टीवी, यू नो दैट इज द विच लैंग्वेज सैटेलाइट टेलीविजन से, जल्दी से बताएंगे सन टीवी। इट इज अबाउट, यस, वेरी गुड, ये तमिल लैंग्वेज सैटेलाइट चैनल, ओके, सैटेलाइट टीवी चैनल्स, वेरी गुड। यस वर्णिका, जी, सन, सोनी एंड स्टार, ओके, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। और ये ऑन कौन करता है? ऑन बाय, वेरी गुड, यस, कलानिधि कलम, यस, कलानिधि मारन, ओके, KALANITHI, ओके, KALANITHI, कलानिधि मारन, ओके।
on by the Kaladini Maran, who is the managing director of the Sun Group. Okay, very good, बहुत ही सुंदर. और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सन टीवी दैट द आईपीएल टीम, ठीक है, आईपीएल टीम है, कौन सी आईपीएल टीम इसका, जल्दी से बताएंगे. ऑनर ऑफ द आईपीएल टीम, हैदराबाद, हैदराबाद. ओके, सनराइज, यस, सनराइजर्स हैदराबाद. वेरी गुड, सनराइजर्स हैदराबाद, बहुत ही सुंदर. तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है. और इम्पोर्टेंट इससे थोड़ा हम सोनी के बारे में बात कर लेते हैं. सो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है. कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, किस चैनल्स पे आता है, जल्दी से बताएंगे. कौन बनेगा करोड़पति, यस, सो दैट इज ब्रॉडकास्ट ऑन द सोनी टीवी. ओके, बहुत ही सुंदर. सो क्वेश्चन जो है आपको, और सीआईडी जो है जल्दी से बताएंगे. सीआईडी, यस, ऑल्सो ऑन द सोनी टीवी. वेरी गुड. तो बाकी आप सीरियल्स का तो आपको पता ही होगा, ठीक है. सारेगामापा और जो आपका इस तरीके से प्रोग्राम्स आता था उस टाइम की क्वेश्चंस है ये सारे. यस, यस, वेरी गुड. और आपका जो है, यस, डांस इंडिया डांस, जल्दी से बताएंगे. क्वेश्चंस आते हैं ये सारे, डांस इंडिया डांस. यस, वेरी गुड. सो ये सारी चीजें, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे भी जाते हैं. ओके, सो दैट यू प्लीज, आपको इस चैनल पे आपको लॉन्चिंग यूज ऑफ द चैनल्स एंड आल्सो फोकस, ठीक है. आप सारी चीजें आपको फोकस करना है, ठीक है. चलिए. सो ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन दोनों अलग अलग कब हुए, व्हेन दे वेर सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर, जल्दी से बताएंगे. इन द ईयर 1976. और किस कमिटी का ये रिकमेंडेशन था, विच कमिटी रिकमेंडेड द अबाउट टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन इनटू द कॉर्पोरेशंस. यस, yesterday we have talked about the Chanda committee. Very good. Chanda committee, when the Chanda committee was set up, Chanda committee कब set up हुआ, 1964. Yes, 1964 में बना, 1966 में रिपोर्ट सबमिट किया गया. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर. चलिए, लेट्स टॉक अबाउट, you know about, you heard about the Pothin Joseph, एवरीबॉडी. पोथेन जोसेफ के बारे में जल्दी से बताएंगे. DAWN. और डॉन कहाँ से पब्लिश होता है, न्यूज़पेपर, एवरीबॉडी. एडिटर ऑफ डॉन. ओके, एंड ऑल्सो दैट द 5 decades के लिए उनको वेरी फेमस फॉर द डेली पॉलिटिकल कॉलम्स, डेली पॉलिटिकल कॉलम्स फॉर 5 decades. ओके, what was the column name here, that over a cup of tea, very famous political column here it is. So they can ask you the questions. Okay, और क्वेश्चन पूछा भी गया, मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ओवर अ कप ऑफ टी यू हैव टू मैच द पेयर, एग्जैक्ट पेयर, ठीक है, आपको पेयर मैच करना होता है. सो दैट इज ओवर अ कप ऑफ टी, द पोथेन जोसेफ. ओके, क्लियर है. He also worked with the notable people of the times, that time the जीना और एनी बेसेंट के साथ भी, और गांधी और सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, इन सारे लोगों के साथ काम भी किया है. ओके, एक एनी बेसेंट से याद आया. यस, वेरी गुड. यस, द डॉन फ्रॉम पाकिस्तान. सो एनी बेसेंट से, यस, एनी बेसेंट से एक न्यूज पेपर, वेरी फेमस न्यूज पेपर, कैन यू नेम, आप लोग नाम बता सकते हो, एवरीबॉडी. यस, न्यू इंडिया, दैट इज न्यू इंडिया. वेरी गुड. यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी का है, ठीक है. चलिए, वेरी गुड. यस, सर्च लाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था कल. सर्च लाइट न्यूज़पेपर दैट पब्लिश फ्रॉम, एवरीबॉडी. यस, दैट पटना. वेरी गुड, एग्जैक्टली.
अनीता प्रताप के बारे में आपको पता होगा। अनीता प्रताप, अनीता प्रताप, एवरीबॉडी नोन एज ए इंडियन राइटर एज वेल एज जर्नलिस्ट। ओके, उन्होंने फर्स्ट, शी वाज द फर्स्ट जर्नलिस्ट हु इंटरव्यूड एलटीटीई चीफ। बताइए। यस, प्रभाकरन। ओके, वी प्रभाकरन, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म। सो एलटीटी चीफ वी प्रभाकरन का उन्होंने फर्स्ट, सी वाज द फर्स्ट हु इंटरव्यूड द एलटीटी चीफ वी प्रभाकरन। सो दैट इज हियर द क्वेश्चन इज आल्सो अबाउट द अनीता प्रताप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शी वाज द एक्चुअल इंडियन ब्यूरो ऑफ द सीएनएन। ये सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एवरीबॉडी। अल अहराम, द फेमस न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री। जल्दी से कंट्री का नाम बताएंगे। अल अहराम इज द न्यूज पेपर, फेमस न्यूज पेपर ऑफ द कंट्री। वेरी गुड, दैट इज इजिप्ट। 1975, सॉरी 1875, 1875। नेक्स्ट ईयर इज अबाउट द डेली मिरर। जल्दी से बताएंगे। डेली मिरर, यस वेरी गुड, दैट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश, 1903। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट ईयर टॉक्ड अबाउट द डॉन that we have talked about. jaldi se everybody, just now we have talked about. Yes, Pakistan, very good, 1941. Okay, number 4, Gulf News, everybody. Gulf News, very famous newspaper of the country. Yes, very good, UAE, Dubai, it published from the Dubai, 1979. ठीक है, नंबर 5 here, इजवेस्तिया। जल्दी से बताएंगे। इजवेस्तिया, रशियन। ओके, वेरी गुड, रशिया, 1917। वेरी गुड, लॉन्गेस्ट रनिंग एंड हाईली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ऑफ द रशिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दे कैन आस्क यू द क्वेश्चंस आल्सो, द लॉन्गेस्ट रनिंग एंड हाईली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ऑफ द रशिया, सो दैट इज व्हाट इजवेस्तिया। ओके, चलिए नंबर 6 द ली मॉन्डे। वेरी गुड, दैट द फ्रांस। बहुत ही सुंदर, फ्रांस, प्लीज नोट इट डाउन, 1944। ओके, 1944। चलिए मैं रफ करूं इसे। हैव यू नोटेड? जल्दी से बताएंगे। नोटेड? यस, सो राइट इट हियर अगेंस्ट नंबर 7, रेफरेंस न्यूज। जल्दी से बताएंगे। रेफरेंस न्यूज, यस, चाइना, वेरी गुड, 1930। This is also a highest circulated newspaper, most popular, 1931. And you know the Wall Street Journal. Wall Street Journal, very good. That is USA. Absolutely, USA. That is 1889. Okay. So name the journalist who was the reporter of the Wall Street Journal, and he was killed by the Taliban. Daniel Pearl. Very good, Daniel Pearl. We have discussed these questions. Okay. बहुत ही सुंदर। चलिए, सो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है सभी लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स है along with the years that I have written here for you, so that you have to remember. Okay, so this was all about for the 2 days.